Hi guys, welcome to Studio Mentors. My name is Ketan. Welcome to this session. And before we move ahead, kindly just let me know if you all can hear me properly, and if you all can see the video also properly. Would love to understand the audio from your side. Hi guys, welcome to the session, guys. Everybody, thank you so much for joining in, guys. Able to hear. Perfect. Okay, I've just shared this PPT with you guys. थोड़ा सा डिटेल में करेंगे. The reason I'm doing this session is because um, this is the this is the one of most important, we would say कि यार ये point है, because a lot of people have asked me कि यार I mean, it's not only the MBA aspirants, but also those who are studying in IIMs, those who are studying in top-notch B school. I've been getting a lot of messages from last 2 days. Ki, sir, what is about this kind of GDP contraction? That there are people out there saying that ki yaar 23.9% negative ho chuka hai, and ये 40 decades में पहली बारी ऐसा हुआ है, so on and so on and so forth, right? So there has been a lot of negativity around. Guys, let's hit that like button. We've got 140 students live. Let's hit that like button. So there has been a lot of talks about it, right? That India's GDP is into negative, and recession अभी आ चुका है और बहुत सारी चीजें होने वाली है, something like that, right? So I know video is not fine मेरे ख्याल से. I'm just getting started with it. I think I should give some time to system also to kind of get the sort of things rolling. Okay, we've got 164 students joining. Okay, Aditya, like that suggestion. Okay, a lot of people here. I cannot take everyone's name out here, but okay, great stuff. Okay, you guys can tell me what sort of questions you have with respect to this GDP. By the way, how does it matter to you? हमको तो कैट देना है, हमको तो बाकी कुछ करना नहीं है. How does this really matter to us? So let me tell you, those who are actually going for CAT as of now, it does matter to you all a lot, because your entire future, or rather your kickstart, or your first job, or your B school would matter a lot. Because अगर ये चीजें, if you do not take into account as of now, then आगे जाके थोड़ा सा पंगा होता है कि यार shit यार ये पहले समझना चाहिए था, या फिर ये पहले जानना चाहिए था. Because when this whole thing started, when this whole thing started, at a first go, wherein we started looking at the lockdown, and when the corona started hitting us, which was around about in the month of March. Guys, remember that was a period wherein a lot of MBA admissions started happening. A lot of interviews, a lot of results started coming in, and students started getting in touch saying that karna kya hai. And I'll tell you, a lot of people, they have actually deferred their admissions. People have actually left colleges like they've left like MDI, they've left colleges like SIBM, SMHRD, IMI, JIM, KGSOM, a couple of IITs also people have left. And that is the reason it actually becomes a little vital for every one of you to understand कि यार ये आगे क्या होने वाला है. And now when you look at corona being there around about, like, it's been like 5 to 6 months, everybody wants to understand कि यार आगे जाके होने क्या वाला है. Are the MBAs really in trouble? Because that's what the point is, right? कि sir, I want to do MBA right now. मैं अभी MBA करने के लिए ready हूँ. Like 2020 का CAT में दूंगा, 2021 में मेरा MBA का first year चालू होने वाला है. तो अगर ये इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसा रहा तो सर क्या होगा, राइट? बिकॉज 23 lakhs हम डालेंगे, 24 lakhs, 25 lakhs, इतनी सारा पैसा अगर हम डालेंगे तो सर क्या होगा, राइट? दैट इज द रीजन इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल to sort of understand. Sir, this coronavirus has completely screwed all of us, and rest of the contribution our government will give. I'm going to talk about that. That's the reason I said हम step by step चलेंगे, because बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा है कि यार we had gone through this session, हमारे colleges में भी ये session हुए हैं, but we are not really getting that clarity. So I'm just going to do my छोटा सा part to give you guys a little bit idea कि यार ये आगे कैसे होगा. Fine. तो पहली
पहली बात, let's get started. What is the topic today, guys? Hit that like button and let's get started. 100, we have got 213 people live. Hit that like button. 4 dislikes already आ चुके हैं haters के. So guys, hit that like button and let me see likes more than 200. Fine. So let's start from a very basic level यार. ठीक है. पहली बात, India's GDP contracted. हाँ, ये जो वर्ड्स है वो जानना बहुत जरूरी है. India's GDP contracted by 20, I think it's 23.9 मेरे ख्याल से. I think I mistake वहां पे. ठीक है, I'm gonna check that out. ठीक है, so that's what you need to understand. ठीक है, contracted by का मतलब होता है it has actually gone down, right? But अगर आप यहाँ पे देखोगे, the point is जहाँ पे हम बात करते हैं, right? It's 23.9. I'll change the slide and I'll change the topic also. 23.9 ये हुआ है. अब यहाँ पे ना पूरा गेम चालू होता है, right? Dipansh, buddy, if you're not interested, please leave. ठीक है, maybe you can go to some other channels जहाँ पे you can have fun, right? So I think I'll sort of yeah. So sorry यार, but ठीक है. I know it's not 29.3, it's 23.9. My mistake. Apologies for that. Well, let's understand this number. Now this number is sort of a worrisome, but it is actually not. It is actually not. It is actually not, right? Jatin, 23.9 से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ जीडीपी. अब यहाँ पे एक टर्म आता है, वो होता है YOY. ये टर्म आता है, वो होता है YOY. That's called as year on year. मतलब आपका 21 का जो क्वार्टर 1 है. अब आप बोलेगे अरे सर 21 का क्वार्टर 1 कैसे? 21 तो अभी तक चालू भी नहीं हुआ, राइट? इग्नोर हेटर्स. आई नो आई हैव टू इग्नोर हेटर्स. अभी हेटर्स के बारे में क्या बोलूं? एक आई कैन सॉर्ट ऑफ गिव यू गाइस एक छोटा सा शेयर यहाँ पे. हेटर्स के लिए जो भी है सुन लो. सॉर्ट ऑफ अर्ज किया है, मोहब्बत करने से फुर्सत नहीं मिले मुझे. अर्ज किया है, मोहब्बत करने से फुर्सत नहीं मिले मुझे, वरना नफरत कैसे करते हैं ये मैं तुमको अच्छे से दिखा देता. फाइन. तो ये था उनके लिए मैसेज. हाँ, चलो लेट्स मूव अहेड. दैट्स अ डिफरेंट एंगल ऑफ केतन सर. ठीक है, तो फाइन. सो ईयर ऑन ईयर आपका जो जीडीपी ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो चुका है. अब सिंपल सी बात है, लोग डर गए, लोग फट गए यहाँ पे. अरे फक यार 23.9 डूड बहुत बड़ा नंबर है. चिल. There is a reason behind it. There is a science behind it. There is a concept behind it. There is a concept behind it. Now the concept is भाई ये जो हुआ है ना, ये year on year हुआ है. मतलब 21 का क्वार्टर 1, ये फाइनेंस का जार्गन होता है. अभी अगर आप देखोगे तो आपका थैंक यू सो मच. अगर आप देखोगे तो आपका जो ईयर है फाइनेंशियल ईयर वो चलेगा 2021 और लास्ट ईयर आपका जो ईयर था वो था 1920. तो ये क्वार्टर 1 होता है 21 का, बिकॉज अपना एंड 21 पे होगा. तो ये थोड़ा सा जार्गन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. एमबीए फाइनेंस करोगे तो आपको ये पता चलेगा. ठीक है, अब इन लोगों ने कंपैरिजन किया कि भाई लास्ट ईयर 2020 जब चालू हुआ था, राइट? लास्ट ईयर जब 2020 चालू हुआ था तब जीडीपी क्या था, तब का जीडीपी और अभी का जीडीपी, उसका डिफरेंस क्या है, उसका चेंज कितना है. तो लास्ट ईयर के जीडीपी के साथ अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो ये नंबर बहुत ही ज्यादा भयानक है. तो ये नंबर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है. बट एक चीज आप याद रखना, लास्ट ईयर की अगर जीडीपी के बारे में मैं बात करूं तो लास्ट ईयर भी अपना जीडीपी कुछ तोप नहीं था. इसके लिए मैं आपको कह रहा हूं कि थोड़ा सा आराम से चलना. मैं आपको एग्जैक्टली ये चीज क्लियर कर दूंगा बिकॉज इस चीज का बहुत ज्यादा हाइप हो चुका है. पहली बात, अभी इतना जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ, इतना जीडीपी नेगेटिव क्यों गया? देयर इज ओनली वन रीजन व्हिच इज कोरोना वायरस, कोविड-19, व्हिच इज कोविड-19. फाइन. अब आपको एक चीज याद करनी है, एक चीज आपको सोचनी है, लॉजिकली सोचनी है, बहुत प्रैक्टिकली सोचनी है कि ठीक है यार, अगर लास्ट ईयर का जीडीपी ऐसा था, इस साल का जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? पहली बात, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 21 की फर्स्ट क्वार्टर के बारे में बात करता हूं, पहला क्वार्टर के बारे में बात करता हूं, विच इज अप्रैल, मई एंड जून, हमें यह देखना है कि बिजनेस क्या हुआ है. ये जो भी मैं बात कर रहा हूं ये रियल जीडीपी है, राइट? ये जो भी मैं बात कर रहा हूं वो रियल जीडीपी है. अभी रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है? रियल जीडीपी इज बेसिकली डिस्काउंटिंग योर इन्फ्लेशन रेट. जहां पे इन्फ्लेशन नहीं आता तो रियल जीडीपी वर्सेस आपका एक होता है सॉर्ट ऑफ नॉमिनल, विल नॉट गेट देयर. जीडीपी का मतलब क्या होता है?
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये फुल फॉर्म है ना, ये फुल फॉर्म है। जीडीपी का मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड कंज्यूम्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर एट अ वन गिवन पॉइंट। लाइक मैं थोड़ा लेमन में बात करूंगा, एक साल पे आपका कितना हुआ। अब हम इसका देख रहे हैं कि भाई क्वार्टर क्वार्टर, लाइक पहला क्वार्टर कंपेयर्ड विद, हाँ चाइना टेंशन भी आप बोल सकते हो, कोई बात नहीं, लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर से पहला क्वार्टर और इस साल का पहला क्वार्टर अगर दोनों आप कंपेयर करोगे ईयर ऑन ईयर, तो यार इस बार तो बिजनेसेस पूरे के पूरे ठप थे, बिजनेसेस तो हो ही नहीं रहे थे। तो ना प्रोडक्शन हुआ ना तुम्हारा कंजम्पशन हुआ। सर प्रोडक्शन तो हो रहा था, प्रोडक्शन तो हो गया पर कंजम्पशन नहीं हुआ, और प्रोडक्शन भी ठप था बिकॉज लॉकडाउन था, रेस्ट्रिक्शंस थे, राइट, सोशल डिस्टेंसिंग था, तो तुम्हारी फैक्ट्रीज भी क्लोज, एवरीथिंग इज क्लोज। बट यहां पे अगर हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर को थोड़ी सी छूट दी गई थी, एग्रीकल्चर को थोड़ा सा छूट दिया गया था कि भाई चलो एग्रीकल्चर तो करना ही चाहिए, बिकॉज देयर आर पीपल दे लिविंग इन देयर, उनका मेन बिजनेस इज रादर देयर मेन लाइवलीहुड रिसोर्सेज एग्री, सो दे कैन गो टू द फार्म्स एंड दे कैन डू द स्टफ, एंड दैट्स द रीजन एग्री बढ़ा। अब अगर हम एक और सिनेरियो देखते हैं इंडिया के जीडीपी का, यार तुम्हारा जीडीपी पहले से ही अच्छा हुआ, अच्छा नहीं था, तुम्हारी जीडीपी की पहले से बैंड बजी थी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर कोई बिजनेस हो ही नहीं रहा, ना ही कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, ना ही कुछ कंज्यूम हो रहा है, तुम्हारे इकोनॉमी में मनी फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो भाई अगर तू जार्गन की बात करेगा या अगर बेसिक के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो जीडीपी क्या बोलता है? जीडीपी कोई इंसाइट नहीं है, जीडीपी इज अ टेक्निकल टर्म, इट्स एन इकोनॉमिकल टर्म। जीडीपी ज्यादा दिमाग नहीं लगता, वो क्या बोलता है कि देखो यार, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ फाइनेंशियल ईयर एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, सिंपल सी बात है। सो अगर कुछ भी नहीं हुआ तो है ही नहीं, सिंपल सी बात है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से देयर इज अ पर्सन, राइट, लेट्स जस्ट से देयर इज अ पर्सन। अब ये जो बंदा है, राइट, ये बंदा जाता है जॉब पे, ये बंदा जाता है जॉब पे। अब ये बंदा जॉब करने लगा, इसकी महीने की सैलरी है 50,000। अब इसकी कैट एग्जाम आ गई, अब बोलता है कि यार कैट एग्जाम है, 3 महीने का मैं छुट्टी डाल देता हूं, दैट्स कॉल्ड एज LWP, मतलब लीव विदाउट पे, समझा? अब जब लीव विदाउट पे होगा तो भाई 3 महीना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों महीना इसके अकाउंट में क्या आएगा? 0 0 0, मतलब कुछ पैसे ही नहीं आएगा। इसका मतलब ये है क्या कि ये बंदा बेकार है? नहीं, तुम रीजन समझो, इस बंदे ने कुछ नहीं करा, इसका कैट एग्जाम था, इसने छुट्टी ले लिया, चमका, ये सेम फंड यहां पे चल रहा है, इसकी वजह से जीडीपी में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्शन आ चुका है। देखो आपका जीडीपी क्या था, आपका जीडीपी वैसे भी कुछ ठीक ठाक नहीं था। लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे 2019-20 का ये वाला अगर आप देखोगे, तभी भी आप 5.2 पे थे, कुछ तोड़ नहीं था, बिकॉज इंडिया इज समथिंग दैट पीपल आर सेइंग दैट 7 to 8% वी कैन एक्चुअली टारगेट फॉर। तो तुम्हारा जीडीपी वैसे भी पहले से अच्छा नहीं था, और उसमें से कोरोना जैसा एक कोई संकट आना जो 100 ईयर्स में एक बार आता है ना। तुम्हारा 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, उसके बाद ये पंगा हुआ पैंडेमिक जो 100 ईयर में आता है। वैभव पर यार, आई नो इट्स नेगेटिव 23.9, मेरे से टाइपो हो चुका है थोड़ा जल्दी जल्दी में, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट, फाइन, कम ऑन, टू एयर इज ह्यूमन, सो यार तो थोड़ा माफ कर देना वहां पे, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रैक्शन वहां पे हुआ है, अब ये चमका, ये चमका, ये इंडिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे इंडिया ने कुछ प्रॉब्लम नहीं करा है, यहाँ पे कोरोना आया उसकी वजह से बिजनेस ही नहीं हो रहा है, मनी नहीं हो रहा है, तो जीडीपी नेगेटिव हो गया। अब आगे चलते हैं, अभी इंडिया का ही हाल नहीं है, ये पूरी तुम्हारी वर्ल्ड इकोनॉमी की हाल है। चाइना से चालू करेंगे। अब आपको पता है चाइना में लॉकडाउन हटा था, Q1 में चाइना स्टार्टेड डूइंग बिजनेस, आफ्टर अ मंथ चाइना स्टार्टेड डूइंग बिजनेस, आफ्टर अ मंथ चाइना स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मास्क, प्रोड्यूसिंग टैबलेट्स, producing everything, and they started exporting it to the entire world. So China was back on the feet after 1 month itself. Hi, thank you for appreciating my content. मैं इसी के लिए कह रहा था कि यार मतलब यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, यहाँ पे थोड़ी सी टाइम पास कर यार, वो डैश डैश चीज यहाँ पे होती नहीं है, ठीक है फाइन। तो एक्सपोर्ट उन्होंने करा, उनका पैसा बन गया, उनकी जीडीपी ग्रो हो गई। अब अगर हम आगे चलते हैं, अगर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, अगर आप पूरा का पूरा देखते हो, लाइक इंडिया इज इन एक्चुअली रेड जोन, बट इट्स ओनली इंडिया। लुक एट यूके 21.7%, राइट, लुक एट फ्रांस 19, negative 13. So it is not only you as a country who is suffering, the entire global economy is suffering. Are you guys with me? It's a global hit, it's a global hit, entire global economy is suffering. But was this the scenario in 2008? It wasn't. Who was badly impacted or highly impacted? It was USA and couple of other countries. Now every other country in the world is impacted. There are countries that we have not even heard of,
There are countries you are not even heard of. Even they have corona patients. There are countries wherein you won't find more than 1 million people. They are kind of impacted with this corona shit, right? And that is the reason this number. So this number is not a derived number. This number is not sort of somebody's problem. It is not India's problem as such. You cannot stop corona. You're getting my point. This number is not wherein people are saying that अच्छा आपने अगर ये नहीं करा होता तो शायद से आपका फायदा हो जाता. It's not like that. So let's talk about 2008. Let's talk about 2008. What happened 2008? The entire economy of USA was completely screwed because of derivatives, right? Because of investment bankers, right? Had they not done all those things, credit default swaps and mortgage-backed securities and credit collateralized debt obligation, world would have been saved. So it is not act of human, it's act of God. I mean, that's what people say, right? So nobody could stop this, and that is the reason everybody has to face this. Now let's move ahead. What's happening? What is this? What is this? If you want some positivity, thoda yoga kar lo. Economy ko ulta dekho, maza aa jayega. Right? Just a fun part, nothing else. Fine. Now let's move ahead. Let's move ahead. So this is your entire schedule. Rather, this is your not schedule. This is the graph that you can see, right? Now what happens? Sir, GDP aap wapas ek bar bata do. GDP is a very simple thing. Production and consumption. The money has to flow in the economy. Now, why China? Now, why China makes more money? Because China ka production and consumption is good. India ka production agar dekhoge to 40% to wastage hota hai. That's the reason we have high inflation and all that. Ab usme nahi chalenge. So if nobody is spending, who has to spend? Government of India. Guys, in normal hai. If nobody is spending, who has to spend? Government of India. Look at your investment. Your investment went down by 47.1%. ऐसे टाइम पे कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? सिंपल सी बात है, तुम्हारा कंजम्पशन गिर गया, ऐसे टाइम पे कौन कंज्यूम करेगा? People don't want to put money, people don't want to buy cars, people don't want to buy flats, people don't want to put money anywhere. The only thing that people want to put their money into is fixed deposit. They just want to put their money into fixed deposit or share market, which is again is not a great news. Like 39,000 is what we have reached, and Nifty is 11.5k. But again, is this the real scenario of economy? No, it's not. It is not, because there are only couple of stocks which are actually pulling your stock market up. 890 was your Reliance ka share. It was around about 23rd March. Reliance touched 2,300. It went by like 400% increment. Another 300% ka increment. You're getting my point? So it is basically FMCG. It's not even pharma. It's basically even Ruchi Soya, Alok Industries, Aarti Industries, Reliance. It is Britannia. Right? All these companies have actually pulled your entire Nifty. अगर आप निफ्टी के बारे में बात करते हैं, लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है. भाई साहब जाके निफ्टी देखो, निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज में से रिलायंस का जो वेटेज है वो है 14.1% आउट ऑफ 100. 14.1%. अगर रिलायंस 300% ग्रो करता है तो तेरा निफ्टी ग्रो करना ही करना है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एंड या पीपल आर पुटिंग मनी इनटू गोल्ड. वॉरेन बफेट हैज पुट इन बिलियंस ऑफ डॉलर इन गोल्ड. So let's get the facts clear. Let's get the conceptual understanding clear. कि यार ये सच में इतना भयानक है क्या? ये सच में इतना प्रॉब्लमेटिक है क्या? I get it, my point. So this is where you need to understand कि हाँ यार reality कुछ अलग है. These are all numbers. These are all numbers. This is not an act of human. That's what I always say, right? अगर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट कहाँ पे था और अभी इन्वेस्टमेंट क्या है? So your government has to spend. It's a Keynesian economy. It's a Keynesian economy. मैंने और एक लेक्चर करा था 1929 का ग्रेट डिप्रेशन. मैंने तभी भी कहा था 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन था वहां पे भी ऐसा ही हुआ था. लोगों ने अपने घर बार बेच के, गोल्ड बेच के, चीजें बेच के स्टॉक मार्केट में पैसा डाला और जो मार्केट गिरा वो बहुत बेकार लॉस था. 1929 it was a black day, like market crashed. It crashed like anything. And then the new president of USA in the year 1933, he said that we have to now spend more money. अब 2008 में अलग क्या हुआ था? 2008 का जो झटका था, that jerk was really bad. And that point in time, the global central banks, European Central Bank, Reserve Bank of India, Fed Reserve, these guys were not ready. Now the governments are ready. Look at USA. Look at Amazon.
look at Apple, look at Netflix, look at Facebook. The A square NF, A square NF. This is the situation even in USA. 4 से 5 स्टॉक्स है आपके जो आपके डाउ को बढ़ा रहे हैं, आपके नास्डैक को बढ़ा रहे हैं. नास्डैक इज लाइफ टाइम हाई 11.9 थाउजेंड, राइट? 11.9 थाउजेंड, 11.9 की 11,900 लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं ये लोग. क्यों? बिकॉज ये जो स्टॉक्स है नेटफ्लिक्स वगैरह, फेसबुक, these guys are growing and they're growing like they are growing like hell. अगर आज भी आप देखोगे निफ्टी में जाके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाके, आपको मोर देन 50% स्टॉक ऐसे मिलेंगे. दे आर अप बाय ओनली 10% से लेके 20% ऑफ देयर लो सिंस मार्च 23rd. थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा रिसर्च करो. इसका मतलब इकोनॉमी एक्चुअल में, ये जो शेयर मार्केट, इट्स अ बबल. There's something called as ये मैंने एक्चुअली पहले वीडियोस भी बनाए. ऑपरेटर करके होता है, ऑपरेटर करके होता है. ये पहले मेरे वीडियोस बनाए थे. 18 लाख डीमैट अकाउंट खुले हैं, उसमें से 10 लाख बाकी है. और हर एक कंपनी का पोर्टफोलियो खोल के देखो, रिटेल लोगों का पैसा बहुत ज्यादा बैठा है यहाँ पे. बिकॉज अभी जो मार्केट खींच रहा है ना ऊपर, वो खाली रिटेल पीपल आर लाइक काइंड ऑफ खींचोफाइंग इट. ओनली रिटेल पीपल आर एक्चुअली पुलिंग द मार्केट. It is not DII, it is not FPI, it is not FII. It's nobody. It's only and only your retail investors. As simple as that. Fine. So this is what it is. Now, what's in the future? So this is what you can see. Manufacturing, services, defense. Defense down. Services down. Manufacturing down. यार manufacturing की बात करते हैं. Manufacturing तो वैसे भी इंडिया की पहली सी बैंड बजी थी. We were screwed on the manufacturing front. It was 2014 when Modi government came into picture. We started promoting Make in India. Make in India की वजह से अभी manufacturing हुआ. Corona has also kind of blessings in disguise because now Apple is coming to India and they're going to produce a lot of stuff from India. So now you might feel that okay, people are not happy with China. Now manufacturing in India will grow. So manufacturing was already fucked. There is no doubt about it. Service कैसे करेगा service? India is a service economy, 70 to 75%. India is a service economy, but nobody is buying anything. Nobody is actually, now e-commerce is pulling up. Now e-commerce is pulling up. That's the reason there is money. And defense, everything is down. So this is something you need to understand. Now here comes the data. Recession recovery was swift. तो सर अभी हम recession में है क्या? नहीं, अभी तक नहीं. April, May, June, July, August, September. This is quarter 2 of what? Of financial year 21. If we go negative in this quarter, YOY, then you can say there is a recession, because that's how you define recession in economics. Consecutively 2 quarters, if your GDP growth is negative, you are in the recession. As simple as that. Now this is the data that I want to give you. And अगर आपने बात करा होगा, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर IIM अहमदाबाद के बारे में बात करो, थोड़ा मोटिवेशन. मैं आपको एक मोटिवेशन ऑलवेज देता हूं कि जो डेटाबेस मिलता है IIM के बच्चों को, इफ यू आर इन IIM अहमदाबाद, you get login ID password. The database that you get, this is the database that I got. This is one of the snap I could get for you. Statista, ये एक research database company है. It's a beautiful company, gives amazing database which helps us to get our analysis and our presentation done very smoothly. So this is something I really love. This is something I really like. So that's the motivation for me, and that's what I can share with you as far as IIM is concerned or ABC KIL is concerned. All these things are at your disposal like very quickly. मजा आता है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, बहुत अच्छा एनालिसिस मिलता है, and learning is going to be on a very high level. This is your recovery of 2009. This is the recovery of 2009. So from Great Depression अगर आप देखोगे 84% recovery हो चुका है. Right? ये 84% growth हो चुका है. So now if you are in MBA first year or if you are getting in MBA next year, you are saved. You don't really have to worry about it. Your life is saved. Now this is the data that shows that whenever you go down, you can actually pull yourself up. Right? तो जब भी रिकवरी होता है, because अभी जो आप नीचे गए हो वो खतरनाक है. मैं I remember ये जब मार्च महीने जब चल रहा था तो बहुत लोग प्रेजेंटेशन बना के कह रहे थे अरे नहीं यार कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, ऐसा है वैसा है. But guys, people need to understand economics, right? People need to understand economics. V-shaped recovery is next to impossible.
V-shaped recovery is next to impossible. I made this article also, rather I also took a lecture जहाँ पे मैंने कहा था more likely it's going to be U-shaped recovery which is happening now. Which is happening now. So number one, growth अच्छा खासा होगा. अब आपको थोड़ा सा डेटा दिखाता हूँ. This is the data that we have. Okay, this is something I should have taken. अच्छा, let me just get this correct. I'm going to show you this data as of now. So what this data tells you is basically in 2008 when we had this subprime crisis, right? In 2008 when we had this subprime crisis, what happened with India as a country? Okay, what happened with Indian economy as such? Fine. So let's have a look at this. Let me get the slideshow in place. Bear with me for next 30 seconds. Now we will understand कि 2008 में क्या हुआ था, उसके बाद recovery कैसे हुआ. Fine. So I'm just gonna take 30 seconds here. We should be up and running. Okay. I'm just sort of J curve नहीं बोल सकते मीना. J curve थोड़ा extreme हो जाएगा. But economy थोड़ी slowly steadily आपकी improve होगी. But again, the whole point is that we want to understand what's in there for MBA का बच्चा लोग. Because अगर आप MBA करते हो इतना पैसा डालोगे तो आपके लिए वहां पे benefit क्या मिलेगा. So that's what I'm going to show it to you now. Let's get back to the main slide. Yes, we are not even including informal in our talks. श्रीतम दास, I did not get that concept. सर इसको बोल दो जब का कब से मैसेज कर रहा है, कौन है? I don't like. I'm not going to focus on comments. मैं आपको Q&A के लिए टाइम दूंगा, थोड़ा आराम से लो. अच्छा यार, I'm not sure why it's not going. Okay. Okay. Some fuck up with this PPT मेरे ख्याल से. Let me see if I can get this out. Okay. Delete. Okay. I'm just gonna keep my slide as of now like this. So yeah, if you see, right, this is your 2008. Okay, this is your 2008. Look at, you went down in 2008 और जब market ऊपर आया, then it was fabulous because now you can see there was a V-shaped recovery as far as 2008 is concerned. I'm not saying कि आज भी V-shaped recovery होगा. What I am saying is that I am so bloody positive on the recovery front. And look at this. This is called as no COVID. जब तो COVID होगा, and let me tell you the analysis. Let me tell you the analysis. The analysis is the analyst and the economist, they still feel that for the next quarter, the second quarter, which we are into now, we will be in dipshit again. We will be in dipshit again. But the moment your corona goes away, you can see the recovery happening out here. So this is what I was saying. This is called as U recovery. This is called as U-shaped recovery. This is what I was talking about. So eventually your economy will start pulling it up. Eventually your economy will start pulling it up. So this was you in the year 2008. Now sir, tell us the fundamental understanding that लाइट 10 लाइक, हाँ ये सब एनीवेज डिसलाइक वाले के बारे में बात नहीं करेंगे. तो 2008 में वी शेप रिकवरी क्यों आया? बिकॉज 2008 में द सबप्राइम क्राइसिस दैट हैपेंड इन यूएसए, it had marginal impact on India. So Indian market was, they were quiet for some time, and then they were like, oh, you know what, everything is fine. So everything started actually growing up. So this is what you need to understand. Now I'll tell you something. I'm going to show you a newspaper article which is quite positive for you all to understand कि अगर आप मेहनत करते हो अगले 2-3 साल में, your life can be really smooth. Yeah, I'm going to show that to you. 1 second. I'm gonna take you guys to that slide, rather to that newspaper article. Now this newspaper article basically shows us how much is the recovery that's happening. And to your surprise, I'll tell you the recovery has already started happening in. But again, recovery won't be happening in the areas of manufacturing. Recovery will not be happening in the areas of metal. Recovery will be happening only in the areas of pharmacy, pharmaceutical, financial services. You go to B schools and check out their packages. You go to B schools and check out their packages. They are paying very well. PCG, McKinsey, Goldman, Deutsche, Morgan, everybody is recruiting. It's just that the numbers of recruitment is a little lower, but people are recruiting. The companies are recruiting, and the packages are also more or less same. Maybe जो बच्चा लोग 2021 में पास आउट होगा उनका पैकेज थोड़ा सा कम होगा, but 2022 का जो लोग है उनकी चांदी है. You guys are going to be rocking.
2023 में जो बच्चा लोग जाएगा, बेसिकली जो अभी कैट लिख रहा है, जो 2023 में पास आउट होगा, आपकी चांदी है. बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, मार्केट इज नाउ कंसोलिडेटिंग. Marketing is now consolidating. Market is now breathing. Market is just waiting for point in time kind of एक opportunity मिल जाए. So now everybody is fucked. So people are like, hold on, don't do anything, don't buy anything, no new projects, no new investment, no new stuff. Just wait and wait. The moment you see that corona shit is gone, in a year's time, 2021 अगर भी आप पकड़ लेते हो, 2021 मार्च एंड भी अगर आप पकड़ के लेते हो, when you guys are going to start with your MBA, the moment people see little bit of ray of hope, the Indian market is going to go crazy because we are the second largest population in the world. We have the maximum number of youngsters in the world. We have maximum spending capacity in the world. We've got maximum FDIs and FIIs coming across the world in the India. India is a bloody hot cake now. Where are the opportunities lying in the world? It's India and China. But China got screwed it up because of their corona shit. So who's at the benefit? It's only India and India. And maybe that is the reason we have this sort of problems happening at the border. If you cannot beat somebody straightforward, then how do you beat somebody? You backstab them. That's what the China is doing at the border, maybe. So the moment this starts happening, it is going to happen on a very high level, right? So now look at this. Look at this. I'm just going to read this passage for you. I'm not sure whether you can see it or not. If you look at railway freight traffic, which is oftentimes a good indicator of economic activity, in July, it is 95% of the level that it was last year. Can you beat that? We recovered 95% compared to last year, negative of only 5%. In fact, in the first 26 days of August, it is 6% higher than the same period last year. Isn't that fabulous? Isn't that fabulous? In the corona shit, these are the growing opportunities. Understand this. Power consumption is only 1.9% lower than the last year. There is consumption that is picking up. There is a demand, but that demand is sort of sitting at the corner because even the demand is now looking for an opportunity. The moment you get the opportunity, you're going to go and you're going to make a lot of money out there. You will be spending like anything. You getting my point, sir? But still, in 2008, we are having positive growth, but this time minus 23.9. I guess you're talking it so light, buddy. I'm not taking it lightly. I have been explaining from last 40-45 minutes, right? I hope you've started. You're understanding my concern from the like you've heard me from first second I started. That's what you need to understand. Yeah, corona is not going to stay for next 100 years. And again, it's a pandemic. It comes only, I won't say only, it comes once in 100 years. और यार एक चीज याद रखो, कभी भी ये चीजें जब भी आती है मार्केट में, मार्केट always need, market economy always need one jerk, one hiccup जो हर साल आता है, rather जो हर 10 साल में एक बार आता है. You getting my point, right? 1999, 2008, 1987, 2020 is corona. The next thing that we might see is around about 2028, 2029, 2030. And I'm not kidding. There are certain people, they said that the market will get fucked in the year 2020. We don't know the reason, but we predict that it might get fucked. So guys, you need to understand, those who are negative, they'll always say that, oh no, this is bad, this is not. They might not, maybe they don't understand the economics, or maybe they just don't understand the stuff. Right? Let's move ahead. E-way bills in August, which capture interest rate trade, are at 99.8%, almost the same as last year. So overall, there is a V-shaped recovery. In couple of areas, there is a V-shaped recovery, which is fabulous. So we are in 2020 now. There is a vaccine. Guys, do you know there is still swine flu? Do you know there is still swine flu? Do you know there is still swine flu? Even this summer, अगर आप research करोगे, even this summer, we recorded 400 cases of swine flu. स्वाइन फ्लू कब आया था यार? स्वाइन फ्लू 2009 में आया था. स्वाइन फ्लू 2009 में आया था. कितने लोगों को पता है कि स्वाइन फ्लू अभी भी है? कितने लोगों को पता है स्वाइन फ्लू अभी भी है? स्वाइन फ्लू 2009 में आया था. You get my point? स्वाइन फ्लू अभी भी है, बट अभी वैक्सीन है. पीपल केयर डैम अबाउट स्वाइन फ्लू.
In a safe way, once you have this vaccine for corona, things are going to be bright and you guys will be passing out in the year 2023 or let's say 2022 ka end hoga. Tab. So guys, this is what you need to look at. So do not get so upset and do not get so freaked out कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसे होगा. I don't even want to say Amazon का पैकेज क्या होगा, इसका पैकेज क्या होगा, उसका पैकेज क्या होगा. Startups are going to pay you good money. Companies will also be paying you good money. And when you take when you take a stop or when you kind of halt your business activities for some period of time, and the next time when you start your business, you bloody go 10x as your power. You're getting my point. Even today, Amazon hiring, Flipkart hiring, Netflix hiring. Even today, you have Baiju's hiring. Today, you have Reliance hiring. Today, you have all the companies hiring. Which businesses are actually impacted? Hotel industries, cinema industries, right? वहां पे हमें जाना ही नहीं है. हमें तो होटल मैनेजमेंट करना ही नहीं है, हमें तो MBA करना है. Finance company. Look at IndusInd. Oh my God! Holy shit! IndusInd was 1,000 plus. IndusInd was 1,000 plus before COVID. It bloody came to 250 rupees. वो स्टॉक 10 साल पुराना प्राइस पे जाके बैठा. आज अगर आप देखोगे IndusInd has touched 650 bucks. Their businesses are growing. Their businesses are growing. So finance is growing. Your pharma is growing. Beverages is growing. Food industry is also growing. FMCG is also growing. You getting my point? हाँ, definitely. Like जब आपकी तरफ ऐसा अगर सिनेरियो आता है तो एक्सेप्शन लोगों को ही हायर करेंगे. And definitely अगर आप अच्छे बीच स्कूल में हो तो वहां पे हायरिंग होगी. But I tell you, when the recovery starts, even people who are in top 50, top 60 B schools, they will make heck lot of good money. जो बच्चा लोग ऐसे B स्कूल में है जो टॉप 50 में भी नहीं आता, टॉप 50 के ऊपर आता है, उनका भी पैकेज अच्छा होगा. A college called as ITM New Bombay. ITM में Amazon 14 lakhs पे करता है, Signum में Amazon 14 lakhs पे करता है. So there is no difference as far as the brand is concerned. You getting my point? Pharma तो ग्रो होगा, बट यार देखो ना यार, फार्मा भी बिट्स एंड पीसेस में ग्रो हो रहा है. इतना तोड़ तो ग्रो नहीं हो रहा फार्मा जितना होना चाहिए था. So guys, that's the analysis that I wanted to give you, that you need to understand from the economic perspective. You don't have to understand from the numbers perspective. Look at the numbers. These are the numbers. It's just a difference. As simple as that. I hope this is now clear. Finance Minister will take key points from this session. Then thank you so much. All right. Yeah, IT companies are growing like anything, man. Look at Infosys. 900 crossed. 900 crossed. Look at TCS doing great. There are companies, there are certain, look at KPIT Technology doing fantastically well. So we are getting back in track. So all these numbers are going to be disappointed. All these numbers are going to hurt the market sentiment. But that's going to be temporary thing. Yeah? It's not going to be permanent. What about MBA and IT and telecom? Good scope, yeah. Amazing scope. Akash Aditya, this can be an achievement. We will talk about it. Agar aapka sort of, if you're a C2C ka bacha, then we will talk about it. Don't worry about it. Arjita Chakrabarti, marketing to always chalega yaar. Marketing and finance are never going to go down. They'll always be, they're always gold. Marketing and finance is always gold. Always gold. Food and agri companies grow and higher. Yeah, food and agri companies will also grow. There is no doubt about it. Energy sector के बारे में कुछ बोली. Energy sector के बारे में क्या बोला? That's the need of the hour. That will grow. That will grow too. The only thing is that digital marketing यार. अगर आपने मेरी प्लेसमेंट की रिपोर्ट देखी होगी, अगर मैंने जो भी प्लेसमेंट का जो भी बनाया था, व्हाट यू से, जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, हर एक आईएम में एटलीस्ट अगर मैं होली ट्रिनिटी और ब्लैकी के, अगर मैं ब्लैकी एज अ क्लस्टर ना देखूं तो यार हर एक आईएम में, न्यू आईएम हो, तुम्हारा बेबी आईएम्स हो, तुम्हारे नॉन आईएम्स हो, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज आर हायरिंग बिकॉज देयर बिजनेस इज डूइंग फैंटास्टिकली वेल. दे हैव मनी, दे आर सिटिंग ऑन बिग कैश. वो तो देगा ही देगा. ये सर क्लास ही नहीं, इकोनॉमी भी अच्छे बताते. हाँ यार, अभी इतना पढ़ लिखा है तो मतलब फाइनेंस कर रहा है तो ये तो हमें आने चाहिए. MBA इज नॉट टॉकिंग दिस थिंग, तो फिर तो हद है भाई. मतलब मैंने अगर MBA का बंदा है, लाइक एनी MBA, if they are not talking this thing, then don't want to say anything. MBA finance. My specialization was MBA, but actually you don't have sort of specialization in IIMs. You basically have electives. So the only positive thing in the agri sector
या तो ओनली पॉजिटिव थिंग इज एग्री सेक्टर, अब कुछ नहीं चलेगा तो एग्री चलेगा ही चलेगा, राइट। बट अगर मैं एग्री का कंपैरिजन करूँ ना यार, देखो यार ये जब चीजें है ना गाइस, ये जो चीजें है ना वो एक्चुअली आप जैसे देखोगे वैसा मैटर करता है। ये सब आप लोग एमबीए में सीखोगे, आई एम वेरी श्योर, अगर अच्छे बी स्कूल में जाओगे तो सीखोगे, बिकॉज ये एक सेशन में कुछ बी स्कूल के बच्चों को, एविएशन इज क्रूड, एविएशन इज क्रूड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अभी एक थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दो, एक आपको एक मजे की बात बताता हूँ। अगर मैं देखूं यहाँ पे, यार ये देखिए 3.4% यहाँ पे क्या लिखा है, एग्रीकल्चर लिखा है। तुमको पता है अगर कोरोना नहीं होता तो ये जितनी भी कंपनीज है ना, ये जितने भी सेक्टर है ना, ये एग्री के बहुत ऊपर होते हैं। और जब अभी एग्री 3.5% बहुत तगड़ा लग रहा है तुमको, बट अगर कोरोना नहीं होता ना तो ये एग्री उसके सामने कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। सो एग्री हैज ग्रोन बिकॉज ऑफ गुड मॉनसून, but the benefit is that just for the fact every other sector is screwed, the only good sector which is in positive is agri, 3.5%। ऑपरेशंस का स्कोप है अच्छा खासा है यार इंडिया में। मार्केटिंग सिंपल सी बात है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अगर कोई कंपनी एफएमसीजी जिसको प्रोडक्ट बेचने हैं तो मार्केटिंग का बच्चा चाहिए मार्केटिंग करने के लिए, पर वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए पैसा चाहिए तो फाइनेंस का बच्चा भी चाहिए, और वो प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए एरर्स कम होनी चाहिए तो ऑपरेशन का बच्चा भी चाहिए, और इतने सारे लोग जब तुम हायर करोगे तो उनको संभालने के लिए तुमको एचआर भी चाहिए। एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड इन इंडिया वी नीड एवरीथिंग। सो इन इंडिया एमबीए फाइनेंस, HR, marketing, operation, system, IT, telecom, everything has a scope. Everything has a scope. You guys are in the golden era. All you guys, all you chaps, all you kids out there, all you guys are in the golden era. All you are in the golden era. Just stay away from Netflix and all that PUBG shit. Invest this time in your career. Invest your time in learning finance, learning economics, doing CAT ka padhai, keeping away all the fake motivation. Just be realistic. You're gonna rock 2 years later on. Take my words today. Mark my words. You guys are gonna rock. You will be paid more than your expectation, and you'll be like, "Holy fuck! I've been paid like." You'll say that, "Sir, never expected." But this golden era is coming. 100 साल के बाद ऐसा टाइम आया है जहाँ पे मार्केट इतना बैठा है, पूरा गोल्डन नहीं, पूरा ग्लोबल इकोनॉमी इतना बैठ गया है। This is a golden period for you all. If you slog your ass for next 2 years, next 3 years, you're gonna have different life. You'll throw party every fucking weekend and you'll tell your friends, dude, the bill is on me. Come and join me free, man. Because I've been slogging my ass like Monday to Friday. I need people. I want to sort of, chill out with them. So you guys come in, I'll pay the bill. That's going to be your attitude. So you want that life? Take this as an opportunity. Take this as an opportunity. There are a lot of people that have not gone for MBA. Colleges are still having vacant seats. Colleges still having vacant seats. So competition है, पर जो मेहनत करेगा वही competition में टिकेगा और वही आगे जाएगा। टाइम पास करेगा, हाँ, और कुछ चीजें करेगा तो भाई you know where you'll be, right? So guys, that's it from my side. I hope this lecture did some good to you. I hope you understood some points. Yeah, this video will get published. I know dislike बहुत ज्यादा है, क्या करें? हर किसी को कंटेंट की वैल्यू नहीं होती है, लोगों को आजकल टाइम पास चाहिए, लोगों को आजकल शुद्ध हिंदी में वो थोड़ा सा बोल नहीं पाता मैं, दो वर्ड भी से चालू होते हैं, बट क्या करें, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड दैट यू ऑल केम इन। वी हैड 292 पीपल ज्वाइनिंग इन। मजा आ गया, इवन आई एंजॉयड द सेशन। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट टू। Hit that like button before you move it, and also guys, start subscribing to my channel. We are putting in a lot of stuff, pretty good content about LRDI, quants, strategies, verbal sessions like this. Trust me, amazing stuff out here. Amazing content is happening on Seduce Mentors ka channel. Kindly subscribe and stay tuned to us. That's it from my side, guys. Thank you so very much. Thank you so very much. Those who are appearing in 2023, you guys are going to having, you guys will be having a good time too. It is that market तब तक थोड़ा सैचुरेट हो जाएगा, but again, you guys will be having, अभी जो MBA करने को जाएगा ना 2021 में, सर जी आपकी 5 उंगलियां घी में होने वाली है। या आपने बहुत लोगों के घर पे सुना होगा, हाँ जी 65,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आई एम सो ग्लैड, 2 साल में 65,000 सब्सक्राइबर्स हो गए सिद्धू के, वो भी सच्चाई बता के, वो भी अच्छी चीजें बता के, बिना फेक मोटिवेशन के, बिना बकचोदी के यूट्यूब चैनल पे, राइट, बिना किसी और चीज के। सो आई एम वेरी हैप्पी। 65 हो चुके हैं, और थोड़ा आगे चलना है। आई नीड योर सपोर्ट यार। यू गाइज लाइक माय वीडियोस,
you guys love my videos, recommend karo bachchon ko, let people know ki yaar this is the content, this is the good stuff. So yeah, thank you so very much guys for all the support and love that you showed on me. So guys, stay tuned to C2C Mentors and I'll see you guys tomorrow. That's it from my side for the day. Thank you so much. Have a beautiful night. Bye bye.